मेरी जमीन महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खूब। We will not tolerate terrorism, cross-border terrorism. तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हो 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 Good morning, everyone. May I please request you to rise for the prayer. Lord, receive our prayers for this school and this country. Protect the innocent, restrain the greedy and the treacherous. Prolong our days in peace and honor. Give us health, food, bright weather, and light hearts. If we plan to do evil, frustrate our will. If we plan to do good, further our endeavors. Cause injuries to be forgotten and kindness to be remembered. Let us lie down at night without fear, so that we may awake and arise tomorrow full of strength and joy. Please be seated. वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ
रहूं जहां में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन आबाद रहे तू, आबाद रहे तू। तलवारों पे सवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। वो तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। Good morning to all of you. A very warm welcome to our constitutional head and Governor of Uttarakhand, Lt Gen Gurmit Singh. He has met over here many of his former colleagues, junior and senior in the armed forces, and I have a feeling that he's happy to be here. Now I'm going to talk to you on some issues which have been coming up in the last 7 years. First of all, naturally, I want to thank all the resource persons who are here, who give us the benefit of their wisdom and knowledge, and also experience, because many of them have been in battle. They have actually seen action. Some have bravery awards. There are our Vice Chairman, General Bhardwaj, is a Veer Chakra. Admiral Arun Prakash is also a Veer Chakra, both in the 71 war. But there are others who have equally, and forgive me if I don't know all their medals, but what I want to say is that we put in our best effort to give the students an indication of what our armed forces do for us, why we are a free nation, why we are a sovereign nation. Many people don't know why we are, and they take it for granted. But it's these armed forces, these gentlemen officers who keep us the way we are. So at Welham Boys School, we decided, I had a conversation once with Shiv Kunal Verma, and it was agreed. He has great knowledge. He's a military historian. He's written books. So it was agreed that Welham would be the platform. We have boys who are disciplined and who will help. And we also have an NCC wing in our school, one of the few schools that has it. The band that played during the Guard of Honor was our own school boys, and the people who marched and
were our own schoolboys. The cadets over there were our own schoolboys. The national anthem was played very kindly by the Indian Military Academy Band, which sits at the back over there. But otherwise, everything here is done by our own boys. And the songs that you have heard, the music, it's all by our own school students. We take pride in that. What I feel is that this military history, which you will hear, which you will see, and which we will talk about, should actually be entered into school classrooms and should become part of the CBSE. So, of course, we learn physics, chemistry, and maths, but there are 126 subjects possible in CBSE. Why not have military history of our own armed forces? This is a suggestion. We are not in politics, we are a school, but we can have an opinion. We are also Indian citizens, and as Indian citizens, we can have an opinion. The thing that you should remember as young people is that actually Pakistan is broke. They don't have the money to fight us. In fact, their former chief, Bajwa, said, actually we don't have more than 2 days of fuel for our tanks and, trucks. So if we have a war with India, it will be a problem. So how are they fighting then? How are they giving us so much trouble? The fact of the matter, and I'm not being political, I'm only being matter of fact, is that China helps them. And now China is shooting at India from the shoulder of Pakistan. Pakistan needs money, they need everything. So China gives it to them in small quantities and then uses Pakistan to needle us. They also don't want Pakistan to do very well, because if Pakistan does very well, then they will not be beggars. So as long as they're beggars, they can be told, you take this, but hammer India. On the other hand, we also don't want Pakistan to be beggars, because if they are beggars, then we'll have the same problem that we had with Bangladesh. Millions of people will walk across the border. Today, the Indian army can shoot 2 Pakistanis at the border if he's trying to come in. But if there's 6,000 women and children come, we'll have to set up a camp and give them food. And actually, as Admiral Pradeep Chauhan, who's here, said at one previous seminar of ours, he said, look at the map of India and turn it upside down. And then you'll see that the largest border, when you look at the top of India upside down, is actually the ocean. And that is an area that we have to look at. The Navy, he said this some years ago, but you would have noticed that the Indian Navy is getting stronger. He'll tell you more about this. But the Indian Navy's importance is growing, growing, and growing. The Indian Army, of course, has to tackle China and has to tackle Pakistan. Now, I just want to tell all of you children one or two things. We as people are soloists. Just try to understand this. You have the solo sitar, the solo tabla. The Europeans and the Chinese have orchestras also. So they'll have a musical orchestra. We don't. In our culture, we haven't had orchestras. We've had the solo sitar. So by being soloists, we are perfect in what we do, but we don't work well in groups. The only area where Indians are happy in groups is at harvest festivals. They should be encouraged, because then Indians get together, they learn to live together. Otherwise, one chap will be playing a sitar and everybody else is listening. But if you go to Europe, you'll see a whole orchestra playing Beethoven. The Chinese can do it. That is an area of weakness here. We have to do a bit of both. And the other thing that you might like to keep in mind as food for thought is, as I said, I said we have Pakistan, China. But actually this third front also, keep it in mind, you'll hear something more about it. But actually the Indian Navy is now getting much stronger, because there is a realization that the South is an extremely important. I want to make one statement for you to think of. China is not our neighbor. Tibet is our neighbor. We made an Indo-Tibetan border police for that reason. How did China become our neighbor? Tibet is our neighbor. We had 10,000 men till 1954, one division in Tibet. Then at that time, the Tibetans, under pressure from the Chinese, and the Tibetans also thought we'll be independent and all, they told the Indian army to get out of Tibet. And we did. So keep all these things in mind, because as far as I'm concerned, one day I hope that Tibet will be our neighbor and not China. So think about these things. This is food for thought. Food for thought also on our attitude, we react. Food for thought on the fact that we find it difficult to work in groups. Here, I'll speak a little bit about Welham. We are very clear about that.
that the principal is doing a great job. Not only putting this function together, which Shiv Kunal Verma from the military point of view has put together. I don't want to name people because that will be a long list. So the principal and her team, Shiv Kunal Verma and his team, and all of you who have come here, all of you students, all of you schools that have come here will make this function a success. Thank you for coming. Thank you for being with us. You're all welcome. And I'm really happy that you're here. I hope we can come up to your expectations. Thank you. Ladies and gentlemen, the session is now going to commence. The topic for the session is Left, Right and Centre. For the first panel discussion, may I invite the chief guest, His Excellency, the Governor of Uttarakhand, Lt Gen Gurmit Singh, Chairman, Welham Boys School, Mr Darshan Singh, and the moderator, Mr Shiv Kunal Verma, to kindly take their seats on the stage. Ladies and gentlemen, students, the principal ma'am, the resource personnel, all of you who have taken the trouble to be here this morning. It gives me tremendous pleasure to see this absolute sea of faces in front of me. This is our 7th military history seminar, and this year we are indeed really privileged to have His Excellency here with us this morning, and I would personally like to thank him for having taken the trouble. Thank you so much, sir, to have you with us. Without any further ado, I'm going to get straight to the point. We're going to have a 30-minute session where we're going to be asking His Excellency some questions, after which he will address all of you. You were born in Amritsar. My mother was also. The family was from Amritsar. They moved to Lahore after that. And it was 1947, of course, ripped all our families apart. You also did your schooling in Kunjpura, sir. In Sainik School, Kunjpura, right? Kapurthala, sorry. And, your entire grounding was in North India. And yet you landed up in one of the finest regiments of the Indian Army, the Assam Regiment, which incidentally was raised during the Second World War, during the Battle of Jasabi. The general has served with the Assam Regiment ever since. He was commissioned into that. And it's one of the, believe me, it's one of the best units. All regiments are fantastic, but the Assam Regiment has been really something very, very special. I've had the privilege of literally, along with my father, being one of the greatest mentors I had was Lt General Sushil Pillai, who was from Assam. And one of the reasons I shot the Northeast Trilogy was because of him. So, sir, it's such a pleasure to have you here. And I would like to really ask you about, your initial impressions about serving with the Assam Regiment. Jai Hind to each one of you. I think it's an honor being here. And I can feel the vibrations of learning. And I'm really touched with the environment which has been built up here, where 3 times he said, let's think about it. And also 3 times he said, food for the thought. The context and the pretext which you set for us. And I'm thankful to you that you have, first sentence you said about me is that I was born in Amritsar. I think I was born in a setting where in our village we had large number of soldiers. My father was in the army, my brother was in the Air Force. And as a small child, only thing which I used to pray for when I used to go to the Golden Temple was कि वाहिगुरु मैनू एक दिन कैप्टन बना दियो. That I should have 3 stars on my shoulder. And life was all a thread of passion and learning. And in the end, he made me 3-star general. Like you said, I'm exceedingly fortunate that I joined Assam Regiment. And my entire learning of life is dedicated to the Assam Regiment soldier, whom we call Rhino. In fact, best of the soldiers, best of
learning from the humane aspect comes from the Northeast. In fact, I must share with you that when I was in school, I was a rider. I was in gymnastics and cricket. Once I went to NDA along with General KJ, who is my squadron type here. I was in riding and polo. So in IMA, I thought I'm going into ASC or 61 cab for polo. But as the fate has, there was another cadet with the same name. It was actually meant for me to go to ASC, but the fate put him into ASC and I walked into Assam Regiment. But I am so thankful to Almighty. Assam Regiment has been a greatest learning for me. In the sense, at times I felt that have we really understood our Northeast? Do we know enough about our Northeast? China is the primary national security threat. But do we understand our Northeast? I think that is one question which has been in the mind since long. And I'm very happy that today you anchored the entire flow of the day or the next 2 days into finding a battle between myth and reality. In fact, I would say the stones of silence which you said, and you're going to, I initially thought it is not stones of silence, it is the stories of silence. Why did we remain silent when the myth was being built? And I'm so happy that you have questioned the basic myth. Is it one China? I think all this gets connected to my regiment. That if you understand Northeast, then you will understand Tibet, and then you will understand China. I think that was the biggest learning. And I must share with you, when I was in National Defense Academy, I learned my Chinese in 73. I was distinction in Chinese. And somewhere, when I used to go leave from the NDA, and in the night while sleeping, sote, I used to mumble in Chinese, and my mother was very worried. "Eh, munde nu ho ki gaya hai gaya." So I personally feel it was the blessing of the Lord that I was commissioned into Assam Regiment, for which I had learned my Chinese earlier. I understood Northeast, and then there was a passion to learn about the China. And I'm fortunate I served for 10 years on China border. So that is what initiated a quest to learn, to find out. Because the biggest challenge in the world today is, what is China? कभी-कभी ऐसा लगता है कि ये जो चाइना की स्पेलिंग है, CHINA, इन, जो इन है, एक साइड में CH है और एक साइड में A है. जो इन है उसको छुपा कर रखा है चाइना ने. So we got to put in more effort to understand China. Whereas in India, in of India is absolutely in the front. For everybody knows what India is all about. That's how I get connected to Assam Regiment and my initial mooring. You're right about that, sir. One of the most fascinating reasons, and I've had the privilege of making the Northeast Trilogy, so I was there for 4 or 5 years, shooting, been to just about every village, everything. We have over 400 different ethnic groups in the Northeast. And in the Assam Regiment, sir, I want to ask you a very topical question. Today we have a lot of problems in Manipur, where we have ethnic clashes between the Meiteis and the Kukis, with the Nagas, in my opinion, being very mature and sitting this out. But in the Assam Regiment, in many of your units, some of your companies are mixed. You have these boys with you. And what is the difference the moment you put a chap in uniform? The same guy, if he's in one of the militant organizations, also would be, whatever. But in the Indian Army, the moment you bring him there, what is it that then dissolves all that, sir? And in the Army, in the unit, whether it's Assam Regiment or even the Assam Rifles, these differences don't seem to matter. So beautiful a question. What changes the man in uniform? I think moment you put on a uniform,
You know this word you and I, the beauty of integrating you and I through this word uniform. We find this word in the word unity also, in the word university also, and the universe also. But the beauty is, moment you put on uniform, I think what leads you is the concept of being one, concept of professionalism, concept of nation first. I think that's what catches you. I must share with you that Brigadier Thengfuga Silo, he raised my unit for Assam. He was Chief Minister in Mizoram. Yes, sir. He visited my unit in Banbasa when I was the commanding officer. And after retirement, he had been in the politics. He had seen the Northeast very critically from every perspective. He shared with me, he says, I want to get every politician of Northeast, I want to get people of Northeast, I want them to come and see how all tribes live together in the regiment. And let me tell you one thing from professional point of view, we as the officers in the Indian Army, we are never bothered that the person comes from which place, what is his background, which tribe he belongs to, which caste he belongs to. What matters is what is the work which has been given to him. What is the task which has been given to him. What is the role which has been given to him. I think एक चीज बहुत पहले सीखी थी. Karmo param dharam. The first religion is the work that you do. I think at times one wonders why there is a conflict, why there is a problem, why there is a shallowness when we talk about the problems in Northeast at times. I think it's a poverty of the thought. It is the higher scale of thinking which has got to be brought in. I'm fortunate I've served in Northeast, in Nagaland, Manipur, Assam. I think the people in Northeast are just too good. They are. Yes. I think they're so enchanting. Their nationalistic feeling is so beautiful. In fact, मैं बार बार प्रभु को इस चीज का धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, ग्रेटिट्यूड करता हूँ कि I had chance to serve in Northeast. I had chance to be with the Northeast boys and see them as a soldier. You know, the beauty is, once you put on a uniform, you become one with them. You'll be surprised because my 50% or more than 50% boys were Christian. I read Bible myself 8 times. I could quote out from various chapters and verses. I could go to the Bible and conduct a session out there. In fact, I would say that entire nation has got to learn the importance of nation first, uniform perspective. I think that is very important. Even Guru Nanak Dev Ji, in the Guru Granth Sahib, the first word is ekam. Ekam means uniformity. Ekam means ekta, jointness, oneness. I think that is the way we need to go. There's a lesson which I've learned for myself from the perspective you said about the Northeast, that why do we have problems there and what is the solution? The things are improving. In fact, I was very touched once my boy told me, one of my Mizo boy, he told me, सब मैं जब दिल्ली गया टैक्सी से उतरा तो टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि I will take payment in dollars. उसको लगा शायद जापान से आया ना जाने कहाँ से आया है. So I think first thing which for me learning is we need to learn more about Northeast. I think Northeast is one of the most beautiful part of our nation. And there's no reason why we should have problem there. I think most important is how to integrate them into oneness of nation first. Absolutely, sir. And the country comes first each and every time. I think जो आपने quote किया था, वो Chetwood just gave us the English interpretation of that. Sir, आप भी वर्दी में नहीं गए,
आपके पिताजी RIMC में थे, आपके ग्रैंडफादर इंडियन कैडेट कॉर्स में थे, फिर आप क्यों नहीं गए सर यूनिफॉर्म में? आप वो भी हमको कहानी बता दीजिए। हाँ, ये बात सही है कि मैं फ़ौज में नहीं गया था, मगर जब मैंने सिविलियन कपड़े पहने थे कॉलेज के बाद, तो मेरे परिवार में मैं पहला था जिसने वर्दी नहीं पहनी थी। मेरे सारे रिश्तेदारों ने वर्दी पहनी थी। मेरे नाना जी के वो भी और उनके दो भाई सैंडहर्स्ट में थे, और मेरे जो दादाजी थे वो थे इंपीरियल कैडेट कॉर में। आप लोगों को कुछ पता होगा, RIMC वालों को तो पता होगा, दैट इंपीरियल कैडेट कॉर 1903 से 1914 तक था। वो वर्ल्ड वॉर 1 के पहले बनाया गया था टू एजुकेट दी फ्यूडल क्लासेस इन इंडिया, कि मतलब वो अंग्रेज़ों के साथ थोड़े डिसिप्लिन रहेंगे फ्यूडल क्लासेस, तो इट विल बी ईजियर टू रूल इंडिया। और फिर उसके बाद मेरे पिताजी भी RIMC गए थे और मैं यहाँ आया था, मगर सब फौज में थे। मेरे पिताजी भी फौज में थे वर्ल्ड वॉर 2 में। वो जो इधर फौजी हैं साहब तो समझते हैं कि ही वॉज IC 441, सो ही ज्वाइंड इन 1939, मतलब दूसरे महायुद्ध के पहले वो गए थे, ज्वाइन किया, और पूरे दूसरे महायुद्ध में उन्होंने भाग लिया था। उनके भाई रॉयल वेल्श गार्ड्स में थे, क्योंकि उस टाइम वो पढ़ रहे थे कैम्ब्रिज में, और मेरे मदर के जो एक भाई थे दून स्कूल में पढ़े थे, मगर वाइस चीफ बन गए थे वायुसेना में, वो एयर मार्शल TS बरार। सो सब गए थे फौज में, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे कुछ दोस्त हैं, जैसे जनरल भारद्वाज जो देहरादून में रहते हैं, जो बहुत मतलब आर्म्ड फोर्सेस में मशहूर हैं, बहुत मॉडेस्ट हैं, ये बताते नहीं हैं, मगर मैं बता दूंगा कि सिंस 1947 जिन्होंने ये ऑलिव ग्राउंड वर्दी पहनी है ना, जो आप मेडल्स गिने, तो इनसे ज़्यादा किसी के मेडल्स नहीं थे। इज़ द मोस्ट डेकोरेटेड इन टर्म्स ऑफ मेडल्स सिंस 1947। और बट ये बात नहीं करेंगे उसकी, बोलेंगे नहीं, और मगर वो फिर भी हमारे वेलम स्कूल के साथ हैं। बहुत टाइम लगाते हैं वेलम स्कूल में, और इस स्कूल की तरक्की के लिए, आगे के लिए, भविष्य के लिए बहुत टाइम लगाते हैं, तो हम इनके आभारी हैं। जब मैंने आर्मी की जब बात आई थी तो मैंने भी किया था। एक इधर गौतम टंडन बैठे हैं डेक्कन हाउस के, ये मेरे जमाती हैं, बोथ वेलम स्कूल और दून स्कूल में, दोनों में ये मेरे साथ थे, और हमने दोनों ने, और दो और थे जिन्होंने NDA का इम्तिहान दिया था, वो 28th कोर्स NDA, और हम सब पास हो गए थे उसमें, मैं भी पास हो गया था। तो अब मैंने 28th कोर्स को ज्वाइन करना था। मेरी मदर अकेली थी, घर बना रही थी चंडीगढ़ में, और मेरे फादर, ये 62 का सेकंड टर्म है, और मेरे फादर वलोंग में थे उन दिनों में, उसको कहते थे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, उसको अरुणाचल नहीं कहते थे। तो उन्होंने कहा कि चलो एक अगले टर्म में इसको भेज देंगे, अभी माँ अकेली है तो इधर रोक लो। वो अगला टर्म नहीं आया, तो इसलिए मैं फौज नहीं किया। वो आज तक वो मौका नहीं आया कि मैं फौज में जाऊं, तो वो बस वो एक बार मौका निकल गया, तो फिर मैंने इंजीनियरिंग करी थी। तो ये कहानी है। Thank you, sir, for that. Sir, you also spent a lot of time studying China. The chairman has talked quite a lot about the borders, etc. But sir, how do you view the Chinese problem in the future? How should this young generation? It's a confusing thing. At one level, we're dealing with them with trade, we're doing all kinds of things. It's not an out-and-out kind of hostile situation like we have with Pakistan. Having been the deputy chief, you obviously have a perception which is right from the top, sir. So how do you view the Chinese in the long run, sir? And how do you see these two tigers on the same Himalayan hill panning out, sir? The question is so beautiful. How do you see China? Biggest challenge in the entire world is to understand China. जैसे मैंने आपको कहा था कि चाइना के इन क्या है, IN in क्या है, very difficult to know. If you look at the Great Wall, that was meant to ensure that the world doesn't understand China. मुझे आज इस बात की बहुत खुशी है. I think all of us are very fortunate that we are sitting in a seminar where the theme of the seminar is myth and reality. I think today, with our research, with our experience, we should be able to blow that myth
मेरे को ऐसा लगता है कि चाइना हैज बीन स्पेंडिंग सो मच ऑफ देयर एनर्जी ऑन दिस मिथ बिल्डिंग, लेकिन अभी हाल ही में आपने देखा कि 15 जून को जो गलवान में हुआ, आई थिंक द मिथ ऑफ द चाइना वाज ब्लोन। वहां पर जो पीएलए की असलियत है वो पूरी दुनिया के सामने में आ गई। और मुझे याद है, आई हैड जॉइंड मीडिया आफ्टर माय रिटायरमेंट एंड आई वाज ऑन अ हिंदी चैनल एंड ऑन 16th जून आई सेड अभी चाइना की उल्टी गिनती शुरू। मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूं। आई बीन वेरी फॉर्चुनेट, एज आई टोल्ड यू, आई स्टार्टेड लर्निंग चाइनीज इन 1973। आई वाज डिस्टिंक्शन, आई लाइक द चाइनीज लैंग्वेज। I'm fortunate that I've been to China 7 times. To understand China, I went to Taiwan into the National Defense University to understand PRC and PLA. मैंने एक मिलिट्री डेलीगेशन लीड किया चाइना, वेयर आई वेंट टू बीजिंग, शंघाई एंड उरुंची। मैं आपके साथ कुछ एक सच्ची बातें शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले बड़ा मिथ है कि चाइना का पीएलए बहुत बड़ी फोर्स है। एवरी टाइम आई वेंट टू चाइना, आई कंपेयर्ड एवरी चाइनीज सोल्जर और द पर्सन आई मेट टू समबडी इन माय बटालियन। मेरी अल्फा कंपनी में, मेरी ब्रेवो कंपनी में किसी के साथ कंपेयर किया, एंड इन दैट कंपैरेटिव एनालिसिस आई फाउंड इंडियन सोल्जर इज फार सुपीरियर देन द पीएलए सोल्जर। दूसरी बात, जो पीएलए की आर्मी है 70% वो वन चाइल्ड के बच्चे हैं। वो एक परिवार का एक बच्चे उस फैमिली के प्रोडक्ट हैं। दे आर द वन हु हैज बीन ब्रॉट अप ऑन चॉकलेट एज सिंगल चाइल्ड इन द फैमिली। दे कांट फाइट। In fact, they don't understand the meaning of supreme sacrifice. दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि पीएलए चाइना की पॉलिटिकल पार्ट की आर्मी है, whereas we are the army of our nation. तो there will be difference. एक ग्रुप है जो पॉलिटिकल पार्टी की आर्मी है और दूसरा जो राष्ट्र की आर्मी है. Next is that the PLA or the China has been investing heavily on the myth. They've been spending trillions of dollars on proxy. अगर आप बहुत बारीक से देखेंगे तो चाइना की जितनी भी स्ट्रैटेजीज, कॉन्सेप्ट, डिजाइन, लड़ाई का तरीका है, that is based on indirect warfare. It is based on proxy warfare. It is based on weak, suspicious aspects like collusiveness with Pakistan. मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहता हूं कि जो चाइना के अंदर में जितनी उनकी आर्मी है वो दो लोगों से बहुत घबराती है. एक तो जो लंबे हैं, टॉल हैं, और दूसरे सरदारों से बहुत घबराती हैं. You'll be surprised. I'm going to share something with you. When the Britishers went to Shanghai, they had taken 6 feet plus tall, sturdy Sikhs with them. और उनको टास्क दिया मिलिट्री पुलिस में कि शंघाई के जो मॉल रोड है, जो मेन रोड है, उसके ऊपर में एनी ट्रैफिक वायलेटर they will pick up 2 of them, strike their head and just leave them on the ground. तो आज भी शंघाई में उनको वो याद है जो मिलिट्री पुलिस के 6 फीट प्लस सिख वाले थे और आज भी घबराते हैं. मैं एक वाक्य आपको बताना चाहता हूं कि मैं शंघाई गया एंड देयर इज अ म्यूजियम इन शंघाई व्हिच showcases that scene where there is a British judge, accused Chinese, and a sentry, Sikh gentleman with turban standing next to him. तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा. So I wanted to take photograph with that statue of the Sikh soldier. So when I stood there, we all North Indians are very cautious when we're being photographed. So I was also a little stiff, and the person taking photograph was removing his padlocks. So when I was standing like this, one young Chinese girl came. She thought I am also a statue. And she touched me from the side, and I said, who
is disturbing me for this photograph, and I just turned my neck. She got so scared that इस statue के अंदर में जान आ गई है. What I want to tell you is, Indian army, Indian soldier, Indian nation, Indian civilization is far superior than China. I think biggest challenge for each one of his, जोर से ताली बजाइए आप. What I want to tell you is, we have responsibility for each one of us out here that we must understand कि हमारी self worth क्या है. A Chinese nation, soldier, their system is absolutely nothing as compared to us. I've seen it for I don't know how many years. I've been on this topic for 30 years. And I've seen them. लेकिन एक बात है कि ये 62 में जो लड़ाई हुई, उसका जो हमारी साइकोलॉजी के ऊपर में इफेक्ट था, दैट वी नीड टू वॉश आउट. हमारे ऊपर में जो मुगलों ने और ब्रिटिश ने एक साइकोलॉजिकली एक मिथ के, एक हमारी सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रेफरेंस को जो एक धक्का दिया, वी गो टू कम आउट ऑफ इट. इनफैक्ट आपने बहुत सुंदर सवाल किया है कि हाउ डू यू लुक एट चाइना. नाउ इट इज इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ अस दैट एज वुहान, as COVID-19 moved on, China didn't have the civilizational character to tell the world that, look, Wuhan, we have a problem, please be careful. They didn't have. I love Chinese people. Chinese people are very simple. But the PLA, PRC, their systems, they are absolute. I feel actually, to be very honest, I feel the Chinese people, they are going through a very tough time. Because the PLA, PRC, the system, the communist system is actually so rigid. And one challenge I want to throw to each one of you sitting out here. You must study China, you must study Chinese, you must investigate, you must do research, and more research you find, more you'll be able to find out the fraud behind the whole perspective of China, PLA, PRC, communism. In fact, I think it's a challenge to each one of us on one side to know your Sabhyata, Sanskriti and Asli Itihas. It is a challenge for you also to know what is the vulnerabilities, sensitivities and weaknesses of China. I think that is what is most important. Can I say something to agree 100% with what the Honorable Governor has said? He made one comment that something has happened in the growth of China where there is a kind of a it's twisted now and it's the upward path is getting changed. And I can tell you that as far as we are concerned, and General Harinder Singh is here, he commanded 14 Corps when the Chinese attacked in Galwan, and he conducted the first 8 discussions with the Chinese. I'm telling you, it's my opinion. From the time Galwan happened, China's rise will change. What you said, sir, starts from there. They have had a problem with us, where, as he says, they may have the IT, they may have the guns and the missiles and all, but man to man on the ground. And it was proved, what was the name of the place where we chased them back after Galwan on the eastern side? Anyway, we chased back about 230 of them. The Indians were just chased them back, and man to man. Because the Chinese have a policy that they will do everything without firing a bullet. Of course, they sometimes do. And then they've had this pandemic. Now they've got the Americans against them. They've tried to take over more than they can manage. They've got Taiwan against them. So I think the turning point of what General Gurmit Singh said is Galwan. From Galwan, you see everything that's happening.
China is downslide. They still have to rise a bit because they have such a large base. But the unlimited growth of China, I agree entirely with General Gurmit Singh. Especially with the Aisa Parivar, who is going to be the future for the nation. I was leading the military delegation, like I told you, we went to Beijing, Shanghai and Urumqi. When we were returning from Urumqi, the liaison officer who was with me was a colonel, woman officer of PLA. So she told me, sir, in the way we have a city which has come up last few years, it has come up very beautiful, you may like to see it. We have about hour and a half, 2 hours with us. So I said, fine. So we stopped in that city. I had 8 officers with me. So I told each one of them, I said, go see the city and come back within 1 hour. And I don't know for what reason, I said, I will sit in the car. I need to do some research and planning. So I will not go and see the city. I'll sit in the car. You know, it was 1 hour complete. All officers came back. But one officer, he didn't return at that time. This PLA woman officer, colonel, she got panicky. She said, sir, one officer has not come back. So I said, don't worry, wait for another 15 minutes. He's a very fine officer, he'll be back. But I could see the panic building up in this woman officer. तो मैंने आंख बंद करके अपने हृदय में बोला कि वाहेगुरु ये गल इंटरनेशनल हैगी है असी इंडिया तो चाइना आए बेइज्जती ना करा दे साडी वो ऑफिसर नू वापस ले आओ So I was praying to Almighty and 15 minutes passed and this officer didn't return. So this liaison officer got extreme panicky and she told me, sir, officer has not come back. We have to, I know, what, do what? I told her, I said, Colonel, just sit down. Wait for another 15 minutes. Everything will be fine. Again, I went into that prayer mode, told Vaheguru. I said, Vaheguru, आज बेइज्जती ना करा दियो तुसी. आज गल इंडिया और चाइना दी हैगी है. वो ऑफिसर नू वापस ले आओ. Because when you talk to the God, you talk in your own mother tongue, you know. Then I went into intense prayer and dot 2 minutes before 30 minutes, this officer returned. He was also a turbaned officer. So he just said, I'm very sorry, sir, I got lost because of language problem. I couldn't. I said, don't worry, it's okay. So what this Chinese colonel, woman officer told me, she said, sir, I was studying you for last half an hour. If it was a PLA officer in your place, he would have killed somebody or would have been extremely angry. How did you control yourself? How did you have that patience in you? I said, I had faith in my officer. Then she told me something very touching. I don't know how to share with you. She said, sir, I had heard in my life that Indians are divine, spiritual and saintly. But today I have seen one example. She said, sir, can I touch? जोर से ताली बजाइए. ये पूरे भारत की सभ्यता की बात है. So this lady officer, colonel, tells me, just mark my word. She tells me, can I touch your feet, sir? I said, no. हमारी सभ्यता में हमारी बेटियां पैरों को हाथ नहीं लगाती हैं. What I want to tell you is, I want to share something which I've heard from many Chinese. Chinese कहते हैं, प्रभु, they don't follow a religious format, but they tell whomsoever they have the faith. They tell their faith center कि हमको अगले जन्म में इंडिया में जन्म देना. You must realize how fortunate you are. आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपका जन्म भारत में हुआ है. I wanted to आपसे मैं सियाचिन के बारे में और CI ऑप्स के बारे में भी सवाल बना के बैठा हुआ था.
लेकिन थोड़ा टाइम पे नज़र रखना है। और एक चीज़ तो मुझे साफ मालूम है कि आपको चाइना भेजना बहुत खतरनाक है, क्योंकि सारी वहाँ की लेडी पॉपुलेशन या तो आपको पोक करना चाहती है या आपके फीट को मिलना चाहती है। सर, ये एक क्वेश्चन तो मैं आपसे पूछूंगा सर, कि आपका यू वर ऑल्सो ऑन द कमिटी विद सियाचिन। नाउ having written a book on Siachen, and I've been quite involved with the Siachen problem right from its inception, आपका क्या सियाचिन पे क्या राय है सर? क्योंकि ये पीस टॉक पे काफी बात हो चुकी है और आप उस कमेटी में भी थे। दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन, आफ्टर व्हिच वी विल आस्क यू टू एड्रेस द गैदरिंग्स। आपने बहुत सुंदर सवाल पूछा है सियाचिन के बारे में। सियाचिन वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड है। सियाचिन में हमने बहुत कुर्बानियां दी हैं। I'm very fortunate I have been to Pakistan as a serving major from military operation twice. Once for CBM talks और एक बार सियाचिन talks के बारे में। और मुझे बहुत खुशी है कि आज इस पल में in this moment we are discussing about myths and reality. कभी कभी ऐसा लगता है कि life is all about reality, red lines. लक्ष्मण रेखा की बात होती है एक राष्ट्र के स्तर के ऊपर में। पहली बात तो जो रेड लाइन है वो पूरा का पूरा पीओके भारत का है, देयर शुड बी नो डाउट। सेकेंडली 1949 में कराची एग्रीमेंट के अंदर में इसका डिलिनेशन किया गया था और उसके बाद में 1972 शिमला एग्रीमेंट ऑल्सो वी हैड डिलिनेशन विच एंडेड अप एट अ पॉइंट NJ 9842। उस इलाका के ऊपर में एक इलाका है 5180 स्क्वायर किलोमीटर का विच इज नोन एज शक्शगम वैली। पाकिस्तान ने 1963 में वो इलाका चाइना को दिया, लेकिन उसके अंदर एक प्रोविजन था कि इसका जो स्वामित्व है दिस विल बी डिसाइडेड वंस कश्मीर इशू इज रिजॉल्व इन द एंड। देखिए, सबसे पहले तो मेरे को आत्मा के अंदर में एक आग सी लग जाती है। जनरल भारद्वाज साहब मेरे गुरु, मेरे आर्मी कमांडर, ही इज बीन माय आइकॉन, माय हीरो। जब मैं ब्रिगेड कमांड कर रहा था 79 ब्रिगेड बारामुल्ला उस इलाके के अंदर में, जब हम LOC पे जाते थे और अपनी पोस्ट के अंदर में तिरंगा झंडा लगाते थे तो मैं सोचता था कि ये तिरंगा झंडा LOC पर नहीं लेकिन बॉर्डर के उस लाइन पे होना चाहिए। तो कंसेप्चुअली जोर से ताली बजाइए आप, क्योंकि ये हमारे राष्ट्र के अहम मुद्दे हैं। हमको अपनी सोच विचार धारणा को बिल्कुल करेक्ट करने की जरूरत है। हमको अपनी रेड लाइन, लक्ष्मण रेखा, हमको अपनी रियलिटी, हमको मिथ को तोड़ना है। सच्ची बात बताऊं तो सियाचिन को जब हम देखते हैं तो इसकी कहानी 72 से शुरू हुई, जब उन्होंने इस इलाका में जो खपालू जगह है उसके आसपास में थोड़ी मिलिट्री एक्टिविटी शुरू हुई। लेट 70s के अंदर में वहां पर एक्सपीडिशन आने शुरू हुए और तब हम भी जागे कि ये क्या चल रहा है। इनफैक्ट ये जो कॉल्यूसिवनेस चाइना और पाकिस्तान के अंदर में है ये तो 1955 से ही शुरू हो गई थी और ये अपने अपने अलग अलग रूप लेते हुए शक्शगम वैली और सियाचिन का ये इस इलाके का रूप लेने लगी थी। और मुझे बहुत खुशी है कि वी टुक द हार्ड डिसीजन, वेंट एंड ऑक्युपाइड आवर पोस्ट इन दैट। बैसाखी का दिन था 1984 का दिन और तब से वी आर होल्डिंग इट। एंड वहां पर दुश्मन सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, दुश्मन टेरेन भी है, चैलेंजेस भी हैं फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। पर एक बात पक्की है मेरे जहन के अंदर में, पहली बात पूरा का पूरा पीओके भारत का है। हमारा जो बाउंड्री है वो पामीर नॉट वहां से शुरू होती है। चाइनीज इनडायरेक्ट हैं, चालाकी बहुत करते हैं। जब 1960 ऑफिशियल टॉक हुआ तो उन्होंने अपने बॉर्डर का डिस्क्रिप्शन काराकोरम पास से शुरू किया, लेकिन हमने अपना बॉर्डर का डिस्क्रिप्शन ट्राई जंक्शन पामीर नॉट से शुरू किया। तो तभी से हम समझ गए थे कि इनकी मंशा क्या है। इनफैक्ट सिंस द डिलिनेशन स्टॉप्ड एट NJ 9842, तो तभी से ये शक था कि चाइना और पाकिस्तान कल्यूसिवनेस और उस चालाकी, चाइना की एक्सपेंशनिज्म
और पाकिस्तान की चालाकियां मिलकर क्या करेंगी. बट वन थिंग इज डेफिनेट, आई एम वेरी हैप्पी दैट इंडिया टुक अ strong decision, hard decision, showed the national will, showed the political will. पर ये जो national will, political will, hard decision है, ये हमारे पूरे परिवार के अंदर में होना बहुत जरूरी. I am exceedingly happy today. मेरे को मालूम नहीं है मैं किस प्रकार से आभार प्रकट करूं कि ये जो आपने सोच कि मिथ को तोड़ना है और रियलिटी को जन्म देना है, ये इस सेमिनार का सबसे बड़ी अचीवमेंट है. The biggest myth, sir, is that Pakistan. The biggest myth, which all of you must remember, is that Pakistan is not on the Siachen Glacier. They are on the other side of the Saltoro Range. And the reality, as His Excellency has said, that even everything, that whole of POK, the whole of the northern areas, is actually our territory. Jai Hind. To be honest, I can feel a very different vibration here today. I can feel the vibration of learning, discipline, and dedication out here. I'm exceedingly happy that this Welham initiative has been taken, and it is giving respect to the topic of military history. And this is the 7th edition that actually shows the consistency, commitment, dedication, and perseverance on the topic of military history. And it has also become the essential fixture of the academic calendar, and it has been on since 2017. I was deeply impressed by Mr. Darshan's words in the morning today. He repeatedly said, think about it. He repeatedly said, food for thought. And I'm very happy he used the word why. In the whole domain of questions, the question why belongs to emperor, lords, leaders, and commanders. क्यों हुआ? भगवान भी पूछता है. It is important for us to analyze everything that happened in the arena of the military history. To understand why did it happen. To analyze it. To come to deductions, recommendations, and suggestions that what we need to do. आज मुझे बहुत खुशी है कि इस सेमिनार की जो नींव रखी है, that is stones of silence. I was wondering philosophically, what is the meaning of this stones of silence? मैं जब पढ़ रहा था बिना ऐनक के, तो मेरे को स्टोन्स एक स्टोरीज की तरह लग रहा था. क्या ये हमारे साइलेंस की, क्या हमारे ये चुपचाप रहने की कहानी है कि मिथ बने, झूठ के बलबूते के ऊपर में इंटरनेशनल, ग्लोबल, रीजनल लेवल के ऊपर में एक झूठ का, भ्रष्टाचार का एक पर्वत बना. गुरु नानक देव जी कहते हैं, सचखंड वसे निरंकार. और हमारे भारतवर्ष में भी यही है कि सत्यमेव जयते. That means the facts, evidence, and their reality is what the most truthful aspect is. लेकिन एक मिलिट्री हिस्ट्री की एक बहुत सच्चाई है. Military history is written by the victors. It is written by those people who dare to write, who dare to put that. ये जो वर्ड है ना, राइटिंग, इसमें भी WRIT. Once you do a writing, it becomes a writ. फिर वो छप जाता है, इम्प्रिंट हो जाता है. इसलिए बहुत जरूरी है कि we should do the research and deep research of military history to understand what were the lessons and how to build up your own future. मुझे ऐसा लगता है कि आज ये जो क्षण है ना, ये भारत के
आने वाले समय के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। इसके अंदर में हमारी ट्रांसफॉर्मेशन, हमारी मॉडर्नाइजेशन, हमारे अमृत काल। I must share with you one incident in my life. It was 1990. I was a major. I was posted in United Nations. I was in Tehran. In Tehran, we had one mission headquarters and 4 sector headquarters. In the sector headquarters where I was a senior operation officer. My boss was a brigadier from Sweden. So one evening, while having a cup of tea together, he asked me, he said, Major Gurmit, I have met all your 10 officers of Indian Army, and I'm deeply impressed with the human resource value of these officers. And I want to ask you, he told me that why India is not superpower with this type of a human resource. I was very touched कि एक स्वीडन के ब्रिगेडियर ने मेरे को इतना सुंदर, गहरा, टचिंग क्वेश्चन पूछा है. Honestly, I didn't know how to answer that question. But I told him, I said, sir, very humbled with your question. I honestly don't know how to answer you. It is just 43 years, 1990 में 43 years हुए थे इंडिपेंडेंस के. But I told him, I said, sir, just wait for the time. Let India be 75 years or 100 years, and we will definitely be a superpower. जोर से ताली बजाइए. Why I am telling you कि जोर से ताली बजाइए इसलिए है कि we are all going to contribute into this dream, into this resolve, into this sankalp of becoming Vishwa Guru, विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर भारत और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र. मैं जन्म तो मेरा अमृतसर हुआ था. पहले सिर्फ पंजाबी आती थी. उसके बाद मैं जब सैनिक स्कूल में गया, I told myself, if you want to become a big officer, big man in life, learn English. तो बहुत मेहनत की इंग्लिश सीखने के लिए. लेकिन जब मैं रिटायर हुआ, मैंने अपने आप को बोला, अगर पूरे राष्ट्र के साथ में बात करनी है, पूरे राष्ट्र के साथ में राष्ट्र की आत्मा से बात करनी है, तो हिंदी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है. One step ahead, I told myself, अगर गहरा ज्ञान प्राप्त करना है तो संस्कृत की नॉलेज होना बहुत जरूरी है. मुझे ऐसा लगता है कि हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं. We are fortunate that we are born in India. हमारी सभ्यता, संस्कृत, हमारा एक्चुअल इतिहास, ये जो वर्ड हिस्ट्री है ना, इनोसेंटली जब आप देखते हैं ये वर्ड हिस्ट्री को, तो ये स्टोरी आती है, HI हाई स्टोरी. लेकिन ये स्टोरी कौन लिखता है? जो स्टोरी लिखी है उसमें से क्या लेसन सीखने हैं, ये हम सब की जिम्मेदारी है. सबसे पहले तो मैं इतना बात करने के बाद मैं बोल रहा हूं, सबसे पहले तो मैं बात जब भावना की होती है तो कहीं पर भी सबसे पहले हो जाता है. आई वेलकम ईच वन ऑफ यू टू उत्तराखंड. देवभूमि, तप भूमि, सैनिक भूमि. अगर सैनिक भूमि में मिलिट्री हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे तो कहां पढ़ेंगे? आई थिंक दिस इज अ लेसन व्हिच आई हैव लर्नड फ्रॉम वेलम बॉयज स्कूल. माय कॉम्प्लीमेंट्स टू यू. My heartiest compliments to the visionaries, to each one of you, to Chairman, for conceptualizing the idea of introducing military history and inviting institutions from outside. आज मुझे पता नहीं क्यों एक डिवाइन सी वाइब्रेशंस का एक महसूस हो रहा है आप सबके अंदर में. मैंने प्रिंसिपल साहिबा को पूछा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, तो शी सेड 557. और 557 में मेरे को 5 नंबर है ना, उसे बहुत प्यार है, क्योंकि वो 5 प्यारों की बात करता है, 5 तत्वों की बात करता है. 7th तो 7th हेवन बोलते ही हैं. फिर मैंने दूसरा सवाल किया कि आपकी फैकल्टी में कितने मेंबर है, तो उन्होंने कहा
75, फिर 7 और 5 का खेल। फिर तीसरा सवाल मैंने उनसे किया कितने स्कूल से विद्यार्थी आए हैं, तो उन्होंने कहा 38। 3 त्रिशूल शिवजी और 8 तो भगवान का ही नंबर होता है। I was just trying to connect all this number with the quest to understand military history of India. I think most important for us is to understand what we are. मैंने उस क्वेश्चनेयर में भी, उस वार्तालाप में भी ये कहा, biggest problem of being Indian is we don't know what is our self-worth. कभी कभी ऐसा लगता है कि 1000 साल जो मुगल और ब्रिटिश, मुगलों ने तो अत्याचार किया और ब्रिटिश ने जो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, जो हमारा एक सेल्फ वर्थ है, उसको बहुत डैमेज किया है। अभी हम सब के सामने में चुनौती है कि किस प्रकार हम अपने सेल्फ वर्थ को पहचानें। मैं आपको जब मैं मिलिट्री हिस्ट्री के बारे में सोचता हूं तो 1971 एक ऐसा चैप्टर है which has got to be studied by every Indian because it was decisive war, it was defining war, और उस स्ट्रैटेजी, उस कॉन्सेप्ट, उस डिजाइन, उस वॉरफेयर के बलबूते के ऊपर में एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ। वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट वी आर। कभी कभी ऐसा लगता है जब हम 1962 की बात करते हैं, उसके अंदर में भी हम उस ब्लैक अध्याय को देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके अंदर में कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं which will give you pride of the highest level. In 62 war, if you study the battle of first Sikh in Bomdila, if you study जसवंतगढ़, और ये बात तो सचमुच बहुत टचिंग है उत्तराखंड के लिए कि महावीर चक्र जो जसवंत सिंह जी थे, आज जहां पर उन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया वहां पर एक मंदिर है। अरुणाचल के लोग उनको बाबा जसवंत बाबा कहते हैं। इनफैक्ट 62 के बाद में जब 67 में नथुला के अंदर में लड़ाई हुई सिक्किम में, तो वी गिव ए ब्लडी नोज टू द एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है, वी गिव ब्लडी नोज टू द चाइनीज। हमको इन सब बैटल्स को राइट पर्सपेक्टिव में पढ़ने की जरूरत है। When you look at Kargil war, I think this was one of the most important conflict that we had. Lessons learned in that. And I'm so happy that you pointed out that Galwan was the turning point of entire perspective. उसके अंदर में बहुत सारे myths को, बहुत सारे झूठ को, बहुत सारे proxy को तोड़ा है। So therefore it is important for each one of us to study this. और मेरे को बहुत खुशी है और मैं कॉम्प्लीमेंट आपके स्कूल को, आपकी स्कूल की लीडरशिप को करना चाहता हूं कि आपने इतना यूनिक सेमिनार किया है। एक बात बहुत सुंदर कही कि ये सेमिनार, इस प्रकार का सेमिनार तमाम पूरे भारत में होना चाहिए। I think it is important that all who think they are good schools, they must encourage military history so that we learn lessons from the past and build up for our future. आज एक समय है हमारे लिए कि we pay tribute to the men and the women, the warrior योद्धास जो भारत के हैं, जिन्होंने यूनिफॉर्म डाली, अपने देश के लिए सुप्रीम सेक्रीफाइस दी। देखिए एक कंपैरिजन, गलवान के अंदर में 20 गलवान के बलवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी। हमने उनके पार्थिव शरीर को उनके गांव, उनके परिवारों को भेजा, एक बिल्कुल डिवाइन तरीके से वी गिव देम द सेंड ऑफ। और दूसरी तरफ चाइना ने क्या किया? दे डिडंट इवन क्लेम द डेड बॉडीज दैट दे हैड। इट हैज बीन लर्न्ड मोर देन 100 डाइड देयर। और देखिए ये जो गलवान की वो रात थी, 15 जून की रात, जब वहां मुठभेड़ हुआ,
बिना हथियार एक गोली फायर किए हुए उनके 100 से ज्यादा को जोर से ताली बजाइए। अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड कि आपके अंदर में डीएनए क्या है, आपका डीएनए, आपका खून, आपकी सोच विचार और धारणा क्या है। दिस यू गॉट टू लर्न फ्रॉम द मिलिट्री हिस्ट्री। मुझे आज बहुत खुशी है कि आपने 6 सेशंस को प्लान किया है और उस 6 सेशंस का जो स्पेक्ट्रम है वो मगध से शुरू होकर इस क्षण तक का है। I'm very happy that you're going to look into our warfare techniques, our art of warfare, our strategy, our concept, our design of warfare. ये जो एक बहुत सुंदर टचिंग सवाल पूछा था कि यूनिफॉर्म डालने के बाद में क्या होता है, एक ऐसा नशा, एक ऐसी लगन और एक ऐसा पैशन जो अंदर से ही ऑनर, करेज और वेलर। आपने एक चीज नोट की है कि ये जो वर्ड है ऑनर, अगर HON को छोड़ दें तो ये OUR, हम सबका कलेक्टिव एरना है। करेज क्या है? करेज में भी ताली मारनी है तो जोर से मारिए, एंजॉय क्लैपिंग, पार्टिसिपेट इन द मोमेंट। क्योंकि ये जो क्षण है ना, ये क्षण वापस नहीं आएंगे। ये प्रभु के बनाए हुए क्षण हैं और ये वापस नहीं आएंगे। दिल करता है अंदर से ताली बजाना, बिकॉज ईच ताली ऑफ यू इज गोइंग टू स्ट्रेंथन योर रिजॉल्व एंड संकल्प। आई थिंक दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग विद द मोमेंट। मुझे आपका मोटो बहुत पसंद है। आपका मोटो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ है, परस्यूट ऑफ स्ट्रेंथ है। और मुझे ये भी बहुत खुशी है कि आपका जो स्कूल का एम्बलम है वो एक एलिफेंट के रूप में एक विशाल। मैं एक बहुत इनोसेंट सा वाकया मेरी जिंदगी का आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं वहां बैठा था तो मैं इस हाथी एलिफेंट को देख रहा था। आई वाज ए कंपनी कमांडर इन श्रीलंका। हम इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के लिए गए थे, तो वहां पर आमतौर पर सुबह सुबह सूर्य उदय होने से पहले, बिफोर द सनराइज, वी यूज्ड टू गो टू द जंगल, गो टू द प्लेस वेयर वी हैड टू अम्बुश द LTT। तो एक दिन मैं अपने 15 जवान को लेकर, हम अम्बुश साइट में बैठे हुए थे, सुबह का वक्त था। तो जैसे हम बैठे, थोड़ा सा क्लियर हो रहा था लाइट सा, तो एक हाथी आया, बहुत सुंदर हाथी, लाइट ब्राउन कलर का जंगली हाथी, और आकर वो हमको ऐसे ऐसे देखने लग गया। मेरे को लगा कि ये कुछ गड़बड़ करेगा, यंग सा हाथी है। एंड मेयर 30 मीटर्स लुकिंग एट अस। उसके चंद सेकंड के बाद में उसका एक और साथी आया, सेम साइज, जैसे कजन होता है। थोड़ी देर बाद एक और आ गया, 3 आ गए। तो मेरे को लगा ये तीनों यंग से हैं, कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। एंड आई वाज द कंपनी कमांडर। तो मैंने अपने जवान को बोला कि कोई भी फायर नहीं करेगा। मेरे लड़के तो नॉर्थ ईस्ट के हैं, वो तो जंगल में सब कुछ जानते हैं। तो मैं ऐसे कोई फायर नहीं करेगा, जस्ट बी अलर्ट, इनकी इंटेंशन ठीक नहीं लग रही है। फिर एक और आया, जैसे उनके पिताजी हों, ही वॉज 1 फीट मोर देन देम, ही ऑल्सो केम, लुक्ड अराउंड। आई सेड कुछ गड़बड़ होने वाला है। कुछ चंद सेकंड में एक उनका ग्रैंडफादर आया, जो फादर से भी 1 फुट बड़ा था। ही ऑल्सो केम लाइक दिस, ऐसे करके। मेरे को लगा अभी पक्का अटैक करेंगे मेरे अम्बुश पार्टी को। मैंने अपना वेपन अपने साथी को दिया, खड़ा होकर। यू वोंट बिलीव व्हाट आई डिड, एंड इट वाज स्पॉन्टेनियस, इट वाज नॉट प्लान्ड। मैं खड़ा होके हाथ जोड़ के जो सबसे बड़ा वाला हाथी था उसकी तरफ ऐसे करके मैंने बोला, गजराज जी, हम फौजी हैं, अपना काम करने आए हैं, गणेश जी को पूछते हैं, आपसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है, आप कृपया प्लीज जाइए। मैंने पता नहीं क्यों ऐसे ही
हृदय से बोला। और व्हाट हैपेंड, वो जो सबसे एल्डर वाला हाथी था, ही मूव्ड बैक। फिर जैसे उसका लड़का इतना खुश नहीं था, थोड़ी देर बाद ही ऑल्सो मूव्ड बैक। लेकिन जो 3 यंग थे, उनका डाउट था, वो भी ऐसे भाई जाए ना जाए ऐसे करके, लेकिन तीनों चले गए। मैंने ये किस्सा इसलिए बताया है कि इफ यू want to communicate, communicate at Atma level, communicate at the soul level. This is a lesson which I want you to learn from this incident. Teaching military history is very important. कभी कभी ऐसा लगता है कि ये पूरा जो कहानी, लड़ाई, वॉरफेयर, नेशनल सिक्योरिटी है, क्या ये सिर्फ यूनिफॉर्म मिलिट्रीज का ही जिम्मेवारी है, जहां हर एक भारतीय की जिम्मेवारी है। यू नो, जब व्हेन आई वाज ए यंग ऑफिसर, वी यूज्ड टू स्टडी दिस थिंग, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ वॉर। तो हमने एक रट्टा लगाने के लिए एक एक्रोनिम याद किया था, डाइम, DIME, डिप्लोमेसी, इंफॉर्मेशन, मिलिट्री, इकोनॉमी, कि ये एलिमेंट्स ऑफ वॉर हैं। लेकिन जैसे उम्र बढ़ती गई, पता चला कि ये तो बहुत बड़ा दायरा है। जो भी राष्ट्र के अंदर में है, सबका कर्तव्य है कि वॉरफेयर के अंदर में पार्टिसिपेट करे, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो पब्लिक ओपिनियन है, चाहे वो politics of the nation should also contribute towards the might of the nation. So जो element of war हैं, जो element of power हैं, that is every one of you. ये हर एक उस आत्मा की जिम्मेवारी है कि आप मिलिट्री वॉर पावर में कंट्रीब्यूट करें। Therefore, it is important that you must study military history. I must say you are very sharp. This family is very sharp. जैसे मैंने पानी के लिए उठाया, आपने ताली मार दिया कि let's give time to the speaker. I must deeply appreciate this family of Welham Boys School कि आपने मिलिट्री हिस्ट्री के पढ़ाने में इतनी अहमियत और इतनी इंपॉर्टेंस दी है। Actually, if you teach, study and understand military history, it will give you a valuable insight into the whole phenomena of the nation, society and the people. It will give you why did this conflict happen, how did it progress. It will give you reasons behind the war and conflict, and then it will make you feel what makes a war or peace. कभी कभी ऐसा लगता है कि आपकी एनालिसिस कि किस प्रकार से नेशनल एंड वर्ल्ड की हिस्ट्रीज बनती हैं, उसके अंदर में मिलिट्री वॉरफेयर का बहुत बड़ा रोल है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मिलिट्री हिस्ट्री और उसकी डिडक्शन हैज गॉट ए फार रीचिंग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल इम्पैक्ट्स। और कभी कभी ऐसा लगता है कि मिलिट्री हिस्ट्री से जो खास सीखने वाली बात है, हाउ टू एनालाइज द लीडर्स किस प्रकार सोचते हैं, किस प्रकार कार्य करते हैं, उनका कैरेक्टर क्या है, उनकी ट्रेनिंग क्या है, बनते कैसे हैं। बिकॉज इन ईच वन ऑफ यू सिटिंग आउट हियर आई कैन सी अ लीडर ऑफ टुमारो। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कैसे करते हैं। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का मतलब है बड़े पैमाने के ऊपर में, मैक्रो लेवल, मास लेवल थिंकिंग, प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है, व्हाट इज डिसीजन मेकिंग। मुझे बहुत खुशी है कि आपने कहा कि आज के इस क्षण के ऊपर में भारत ने कुछ एक नई चीजें सीखी हैं,
आपने कहा कि वी हैव बीन रिएक्टिव इन द पास्ट। आई थिंक ये कहना, ये डिडक्शन करना कि वी हैव बीन रिएक्टिव इन द पास्ट एक्चुअली प्लूमेट्स अस टू बिकम प्रोएक्टिव, प्लान्ड, प्रीएम्प्टिव। ये जो बालाकोट के ऊपर में स्ट्राइक किया था, दैट इज द आउटकम आउट ऑफ ए हार्ड डिसीजन, पॉलिटिकल विल, नेशनल विल। ये जो आर्टिकल 370 को निकाला है, दैट इज द आउटकम ऑफ हार्ड डिसीजन, पॉलिटिकल विल। आई थिंक दिस इज व्हाट वी एक्चुअली, मैं आपको सच्चे दिल से एक चीज बताना चाहता हूं कि भारत ने अपना रुख चेंज कर लिया है। We have changed the way we think. We have changed the way we express our national will. कुछ साल पहले हम लोग दहाड़ के नहीं बोलते थे कि पीओके हमारा है, एक्साइशन हमारा है और एक दिन इसको लेकर रहेंगे। हमको अपनी रेड लाइंस, सोवरेनिटी की, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रेड लाइंस और लक्ष्मण रेखा को अंकित करना बहुत जरूरी है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, बिगेस्ट चैलेंज इन फ्रंट ऑफ अस इज टू स्टडी द एस्पेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। बिगेस्ट चैलेंज इन फ्रंट ऑफ us is to study how artificial intelligence, how space, cyber, big data is shaped the warfare now. How drones, robotics are coming in. मुझे ऐसा लगता है कि competition hereafter is not on as much on the other aspect as it is on artificial intelligence and technology. आप जो भारत का भविष्य बनाने वाले हैं, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के साथ में गहरी दोस्ती करनी पड़ेगी। जो पहले थे, हमने सबक सीखा है, वी शुड टॉक अबाउट प्रॉब्लम एंड डेंजर्स of artificial intelligence, but now we got to take it as an opportunity and use it for every facet of our being, including warfare. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि research and development is something which you got to make your forte. और आप ये ऐसा परिवार है, Welham's Boys School, which can take the DNA of research and development of टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल एज पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। आज बड़ा अच्छा लगा कि ये जो आपने थीम लेफ्ट, राइट और सेंटर, कि कोई पॉइंट ऐसा ना हो जो बाएं से या दाहिने से निकल जाए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज एवरी पॉइंट एंड एंश्योर दैट वी लर्न आउट ऑफ इट। एक क्षेत्र है, उसको बोलते हैं कॉग्निटिव डोमेन, सोच विचार और धारणा का क्षेत्र, नैरेटिव्स का क्षेत्र। You'll be surprised how much of money is spent on narratives. स्पेशली अगर आप चाइना को स्टडी करेंगे तो इनके 3W हैं, 3 वॉरफेयर हैं, मीडिया वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर, प्रॉक्सी वॉर, और दे स्पेंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ मनी ऑन दिस। सो यू गॉट टू बी केयरफुल कि आपका जो डिसीजन है, आपका जो ओपिनियन है, आपकी जो सोच है, दैट शुड बी इन्फॉर्म्ड, दैट शुड बी रिसर्च एंड दैट शुड बी फॉर योर नेशन, सोसाइटी एंड द पीपल। आज ऐसा लग रहा है मैं फिर अपने स्कूल में वापस आ गया हूं। ताली नहीं मारेंगे? मेरे को लगता है कि मैं सबको बोलता हूं कि मैं सिख हूं, मैं सिख धर्म का पालन करता हूं, और सिख का मतलब ही है टू लर्न। लाइफ इज ऑल अबाउट कंटिन्यूम ऑफ लर्निंग। आई शुड टेल माय सोल्जर्स कि हमको हर वक्त सीखते रहना है, ताकि जब चिता के ऊपर में भी जाएं तो टांगे सीधी, हाथ और गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। उस वक्त तक सीखना हमको है। मेरी आपसे सबसे एक रिक्वेस्ट है
लाइफ इज ऑल अबाउट दैट एक्स्ट्रा 1 hour. दो साथी हैं, एक तो थक के सो जाता है, जहां थक के आराम करता है, और दूसरा साथी कहता है कि आई विल पुट इन 1 hour एक्स्ट्रा इनटू व्हाट आई वाज डूइंग. लीडरशिप इज ऑल अबाउट दैट 1 hour एक्स्ट्रा. आप अपनी आत्मा से पूछिए कि क्या आपने अपना ये संकल्प लिया है कि आई विल पुट इन दैट 1 hour एक्स्ट्रा टू एक्सेल इन लाइफ. प्लीज डू दैट. जोर से ताली मारिए. दूसरा है, एक इंसान में और एक जानवर में फर्क क्या है. इंसान के अंदर में एक लगन होती है, एक पैशन होती है, एक निष्ठा होती है. कभी कभी हम सुनते हैं, मीरा हो गई मगन लागी ऐसी लगन. इतनी लगन लग गई कि उसी में उसको भगवान दिखाई देता है. उसी प्रकार हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसके अंदर में हमको भगवान दिखाई देना चाहिए. आई वॉन्ट टू रेकमेंड 2 पैशंस टू यू. फर्स्ट पैशन इज टू रीड and read. I will request that you must learn the art of reading. किस प्रकार से पढ़ना है. The knowledge gained by reading will never ever go waste in life. Next is there should be passion to learn. ऋग्वेद में पहला सवाल है क्रिय. That means question is the mother of wisdom. Ask questions and don't be satisfied with yourself till the time you get the appropriate answer to that question which is cropped in you. और तीसरा चीज, मैं शिव जी के रूप में, त्रिशूल के रूप में आपको 3 ये सुझाव. पहला मैंने कहा एक्स्ट्रा 1 hour, दूसरा पैशन टू रीड एंड लर्न, और तीसरा है कम्युनिकेशन स्किल. हम जब किसी से बात करते हैं, व्हेन वी कम्युनिकेट, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कैसे करें. एक चॉइस है दिमाग से बोलें. एक ऐसा लगता है जब दिमाग से बोलते हैं तो चालाकी आती है, यू स्टार्ट बीइंग क्लेवर. और एक तरीका है आप आत्मा से बोलें. आत्मा से बोलने से सच्चाई और सच्चाई ही निकलती है. लेकिन आत्मा से बोलने से पहले आपको 2 एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी. जो भी विषय है उसके ऊपर में बहुत डीप रिसर्च, और तीसरा उस सब्जेक्ट के ऊपर में कनेक्ट होना, ताकि आपकी आत्मा उससे कनेक्ट है. और जब भी आप बात करते हैं तो आपकी इन्वॉल्वमेंट कम्युनिकेशन में ऐसी होनी चाहिए कि आपकी आंखें, आपका हाथ, आपकी आवाज, आपके शब्द पूरे के पूरे कनेक्टेड होने चाहिए. जब अपने परिवार से बात करते हैं तो दिल करता है कि बात करते रहो, बट द बिगेस्ट रियलिटी इज द टाइम. लेकिन फिर भी मैं जो सेकंड लेफ्टिनेंट के टाइम पर मैंने अपने आप को एक डायरेक्शन दिया था, जब मैं अमृतसर गुरुद्वारे साहब में गया था. आई वांट टू शेयर विद यू एज द लास्ट पॉइंट. मैंने अपने आप को कहा कि अपने अंदर में गुरु नानक देव जी को बसाओ. गुरु नानक देव जी की 4 क्वालिटी को मैं चाहता हूं कि हर एक जो लीडर है, हर एक जो स्टूडेंट है, वो इन 4 क्वालिटीज ऑफ गुरु नानक देव जी को अध्ययन करे, रिसर्च करे और अपने अंदर में बसाएं. पहला है साधारणता, सिंप्लिसिटी. स्ट्रॉन्ग पीपल आर द वन हु चूज द पाथ ऑफ सिंप्लिसिटी. तो सिंप्लिसिटी कोई कमजोरी नहीं है, एक स्ट्रेंथ है. सेकेंड इज इनोसेंस. नेवर लूज योर ओन इनोसेंस. जो आपके अंदर में मासूमियत है ना, विच आई कैन सी इन ईच वन ऑफ यू, मेंटेन दिस. ये सबसे प्यारी चीज है एक इंसान के अंदर में, मासूमियत.
तीसरा है हम्बलनेस, नम्रता। यू मे बिकम एनीथिंग इन लाइफ बट बी हम्बल। और चौथा चीज है करुणा, कंपैशन। लर्न टू लिव फॉर अदर्स, हेल्प अदर्स। गुरु नानक देव जी ने कहा सब कुछ तेरा। उन्होंने कहा सर्वदा भला, वर्क फॉर अदर्स। जिस प्रकार से आपने मेरे को सुना है, जिस प्रकार से आप कनेक्ट हुए हैं आत्मा के स्तर पर, आई एम डेफिनेट and I go back with the confidence that I see भारत को एक विश्व गुरु, विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर भारत और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनते हुए। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम।